Hello students, how are you? I hope you are healthy and safe at your home and you are doing the practices of your sums and taking initiative of your studies. As you know कि डेली आपको वीडियोस जो हैं वो दी जा रही हैं. इन लास्ट वीडियो यू स्टडीड द पास्ट एडजस्टमेंट्स. लास्ट वीडियो में आपने पास्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि किस तरह जो फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडिंग होने के बाद जितनी भी एरर्स होती हैं, हाउ वी रिमूव दैट एरर. एंड टुडे I am here to give a new topic, to introduce to new topic. That topic is guarantee of profit to a partner. That means guarantee is given of profit to a partner. Sometime when any other partner is entered in the firm, then remaining partners of the firm or any one of the partner give the guarantee of profit to partner. You join the company, you join the firm, and minimum that fixed amount is given to the profit. That or on that time it doesn't matter firm earn profit or firm earn loss. क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई है पार्टनर को, वो गारंटी जो है एनी वन ऑफ द पार्टनर, या तो कोई एक पार्टनर दे देगा और बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन गिवन रेशियो, या बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में अपनी गारंटी को जो है बियर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म and they want to enter the C because his goodwill is very good in the society. They know that if we enter the C in our business will be grow. So they enter the C and give the guarantee that given by A that you enter our business, you join our business, and minimum 1 lakh profit per year we will provide. That means guarantee is given by only one partner. And another case, if C is entered and A and B both take guarantee that we will give the profit, minimum profit of 1 lakh rupees, may be equal, may be in any other satisfied ratio. So now I will explain this topic with the help of an question. This is the question number of 73 of the D.K. Goyal book. Question number 73 is A, B and C were in partnership sharing profits in a ratio of 1:2:3. Their fixed capitals on 1st April 2018 were rupees A 3 lakh, B 4 lakh 50,000 and C rupees 10 lakh. Their partnership deed provided for the following. A provides his personal office to the firm for business use, charging yearly rent of rupees 1,50,000. Second, interest on capital at the rate of 8% per annum and interest on drawings at the rate of 10% per annum. A was allowed a salary rupees 10,000 per month. B was allowed a commission of rupees 10% net profit as shown by profit and loss account after charging such commission. And fifth, C was guaranteed a profit of rupees 3 lakh after making all the adjustment. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was rupees 10 lakh 30,000 before making above adjustment. You are informed that A has withdrawn rupees 5,000 at the beginning of each month, B has withdrawn rupees 5,000 at the end of each month, and C has withdrawn rupees 24,000 at the beginning of each quarter. Prepare profit and loss appropriation account and partner current account. So in this question, there are 5 adjustments and their capitals are fixed. So, and you have to prepare profit and loss appropriation account and partner current account. So first of all, we start our question with profit and loss appropriation account. First of all, we transfer the profit by
profit and loss account being profit. Here profit is given 10,30,000, but first adjustment is A is given his office, personal office to firm, and he charged rupees 1,50,000 as rent. तो वो जो A को रेंट दिया जा रहा है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सो वी डोंट मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर. यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट जो है वो प्रॉफिट में से 1,50,000 का रेंट माइनस कर देंगे. रिमेनिंग प्रॉफिट बिकम 8,80,000. नाउ वी गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकेंड एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन capital. First of all, in working note, we calculate the interest on capital and their capitals are fixed. A capital is rupees 3 lakh and rate of interest is 8% per annum. That means 24,000. Now B interest and B capital is rupees 4,50,000. Multiply 8 by 100. Then interest on capital is 36,000. Now C capital, C interest, C capital is 10 lakh. Multiply 8 by 100. That means 80,000. And we transfer this interest on capital on the debit side of profit and loss appropriation account to interest on capital. Be careful in this question. It is given partner capital account is fixed. So we use here A current account 24,000, B current account 36,000 and C current account 80,000. Then total interest on capital is 1,40,000. Clear? Now third adjustment. Now second adjustment, interest on drawing. We make second working note to calculate interest on drawing. A interest on drawings. And in the question it is given A withdraws rupees 5,000 per month. That means yearly drawings 5,000 multiplied 12, and he withdraw beginning of the each month, and rate of interest is 10% per annum. 10 by 100. Here we write average time period, that is beginning of the month, that means 6.5 month. 13 by 2 month multiplied by 1 by 12. Now we calculate interest on drawings. It become 3,250. Now we calculate B interest on drawings. B withdraws 5,000 per month. So annual drawings are 5,000 multiplied 12. Rate of interest 10 by 100. And he withdraws end of the each month. That means average time period is 11 by 2 into 1 by 12. 12 and total interest 2,750. Now we calculate the C interest on drawing, and C withdraws 24,000 per quarter. Per quarter means there are 4 quarters. We multiplied the 4 and rate of interest is 10 by 100 and average time period is per beginning of the each quarter, that means 15 by 2 month into 1 by 12. So we calculate 12 by 12, 4 3 the 12, 3 8 the 24,
1 0 by 1 0 and 1 0 and 2 4 ja. That means total interest on drawings is 6,000. And now we record this interest on drawings in the credit side of profit and loss appropriation account by interest on drawings. A current account 3,250, B current account 2,750 and C current account 6,000. Then total interest on drawings is 12,000. Now we solve our adjustment number 3. A was allowed a salary 10,000 per month. तो A को सैलरी दी जा रही है on debit side to salary to A. 10,000 per month, that means 10,000 multiplied 12 is equal to 1,20,000. Now, fourth adjustment is B was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account after charging such commission. तो हमने कमीशन कैलकुलेट करनी है बी की और फार्मूला कौन सा लगाना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट विच प्रॉफिट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट शोन हो रहा है 8,80,000 एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन फार्मूला इज 5 अपॉन में 10 अपॉन में 110. Rate of commission is 10% and after charging such commission, that means 100 plus rate of commission. 100 plus 10 is equal to 110. Then commission to B is equal to 80,000. Clear? It is also entered in the debit side of the profit and loss appropriation account to commission to B. 80,000. Now we come on the last adjustment, which is guarantee. Here C was guaranteed a profit of rupees 3 lakh after making all adjustment. All adjustments के बाद जो C को गारंटी दी गई है वो 3 लाख प्रॉफिट की दी गई है. तो अब इस गारंटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट. अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट जो 8,80,000 प्लस 12,000 ड्रॉइंग्स माइनस 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 1,20,000 सैलरी टू ए प्लस 80,000 कमीशन टू बी. देन टोटल डिविजिबल प्रॉफिट बिकम 5,52,000. It is our divisible profit. And now we divide our divisible profit in their agreed ratio. Agreed ratio is 1:2:3. Then A share 5,52,000 multiply 1 by 6. 1:2:3 means 1/6 and it become 92,000. 6 9 जा 54 and 6 2 जा 12. तो A शेयर है 92,000, B शेयर 5,52,000 मल्टीप्लाई में 2/6 92,000 मल्टीप्लाई बाय में 2 that means 1,84,000. Now C share is equal to 5,52,000 multiply by में 3/6 92,000 multiply by में 3 2,76,000. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि C का शेयर जो आ रहा है वो 2,76,000 का आ रहा है जबकि उसको गारंटी दी गई थी 3 लाख रुपीस की. दैट मीन्स जो C का प्रॉफिट है वो 2,76,000 है बट
he is guaranteed by A and B minimum profit of 3 lakh. So that means how many deficiency here? First of all, we find the deficiency of C profit, that is 24,000. 24,000 जो प्रॉफिट है वो लेस है, और this deficiency is paid by A and B. This deficiency is paid by A and B in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio, and profit sharing ratio is 1:2. Now we divide this 24,000 in 1:2. ये जो 24,000 की डेफिशिएंसी है ये ए और बी बियर करेंगे और सी को गारंटी का प्रॉफिट कंप्लीट करके देंगे, और वो 24,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? 1:2 में. सो वी डिवाइड द प्रॉफिट. ए बियर 24,000 मल्टीप्लाई बाय में 1/3. 1 + 2 3, 8,000, and B bear 24,000 मल्टीप्लाई बाय में 2/3, 8 2 जा 16,000. अब ए और बी ने प्रॉफिट जो है वो बियर कर रखा था, इस डेफिशिएंसी को बॉर्न किया है, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? हम ए और बी में से ये प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट उन्होंने किसको देना है? सी को देना है. सी के प्रॉफिट को 3 लाख तक कंप्लीट करना है, तो ए जो है अपने प्रॉफिट में से 8,000 माइनस कर देगा और सी में प्लस कर देंगे. इसी तरह से बी का 16,000 प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे और सी में प्लस कर देंगे. सो यू ऑब्जर्व द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन केयरफुली. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट. अब ए का प्रॉफिट कितना था? 92,000, बट 8,000 इज गिवन टू सी. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेम बी करंट अकाउंट, प्रॉफिट इज 1,84,000 माइनस 16,000. क्लियर? एंड सी करंट अकाउंट, सी का प्रॉफिट था 2,76,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000. तो सी का प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपीज. ए का प्रॉफिट हो गया 84,000. 92 माइनस 8, 84,000, एंड बी का प्रॉफिट आ जाएगा 1,68,000. नाउ वी क्लोज द अकाउंट. टोटल बिकम 8,92,000 and here 8,92,000. It is the guarantee. ये गारंटी जो है वो ए और बी ने दे रखी थी. किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अगर क्वेश्चन में कोई फिक्स रेशियो होती, इक्वल होती या 3:2 जो भी होता, तो ये डेफिशिएंसी उसी रेशियो में डिवाइड कर दी जाती. तो नेक्स्ट we will prepare पार्टनर करंट अकाउंट. तो इसका पार्टनर करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको आइटम्स याद रखनी है. नाउ पार्टनर करंट अकाउंट. क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कहीं बैलेंस नहीं दे रखा, हमने सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अमाउंट ही ट्रांसफर करनी है. So first of all, A, B, C. A, B, C. First adjustment थी interest on capital. By interest on capital, A 24,000, B 36,000 and C 80,000. After that
salary to A 1,20,000. Next, commission to B 80,000. And on debit side, टू ड्राइंग्स, क्योंकि करंट अकाउंट है पहले हम ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे. 2 ड्राइंग्स. अब ए ने ड्राइंग्स कितने विड्रॉ किए हैं? 5,000 पर मंथ है, तो देन ईयरली इट बिकम 60,000. B also withdraws 5,000 per month, yearly 60,000, and C withdraws 24,000 per quarter, and we multiply the quarter with 4, that become 96,000. And after that we record the interest on drawings 3,250, 2,750 and 6,000. Now we balancing the account, that is enlarged by P&L appropriation account, share of profit. अब A का प्रॉफिट था 84,000, B का 1,68,000 and C profit 3 lakh. Now we balancing the totaling and balancing the account. A total is 2,28,000 and B total is 2,84,000 and C total is 3,80,000. Now we balancing. First of all, A to balance CD. It balance become 1,64,750 and B balance total is 2,84,000. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, it become 2,21,250 and last 3,80,000 minus 1,02,000, it become 2,78,000. That is their closing balance of current account. I hope you understand the question. Pause करना.